Today we explain numerical of depression of freezing point. First question, take NCERT. Here we write question 1 NCERT. Question is calculate the mass of ascorbic acid. We write bracket vitamin C. Vitamin C. Molecular mass of vitamin C is C6H8O6. To be dissolved in 75 gram of acetic acid. To lower its melting point by 1.5 degree Celsius. Kf is equal to 3.9 Kelvin kg mole inverse. It is a numerical of NCERT. Question is calculate the mass of ascorbic acid vitamin C C6H8O6. Ascorbic acid means the chemical name of vitamin C, अर्थात विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी का मोलिकुलर फार्मूला याद कर लीजिएगा कि C6H8O6 होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैलकुलेट कीजिए। इस क्वेश्चन में एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपको सॉल्यूट है और एसिटिक एसिड जो है सॉल्वेंट है। तो हम लोग लिखते हैं स्मॉल w इंडिकेट करता है मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हेयर वी राइट स्मॉल w इज इक्वल टू व्हाट? इन द क्वेश्चन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। Acetic acid is solvent in the question. Here we write mass of solvent capital W is equal to 75 gram. In the question, lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड के कितने मास को आपको 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिजोल्व कीजिएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कितना लोअर हो जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो लोअर का मतलब हुआ डेल्टा TF का वैल्यू जो है आपको दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। हमने हिंदी मीडियम के वीडियो में इसको समझा दिया है कैसे डिग्री सेल्सियस केल्विन में हो जाता है। अब जो है केएफ का मान जो है आपको देखिए दिया हुआ है 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड खोजना है।
इस क्वेश्चन में एस्कॉर्बिक एसिड जो है सॉल्यूट है, इसलिए इसका मोलर मास खोजना जरूरी है। देखिए अब मॉलिक्यूलर फार्मूला नीचे एम के नीचे लिख दिया है हमने। इसका एटॉमिक वेट 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 हो जाएगा। ये इसका एटॉमिक वेट 1 होता है, 1 और 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 96 हो गया, इतना आएगा ऐड करने पर। अब हम लोग ऐसा फार्मूला सेलेक्ट करेंगे जिसमें सभी पार्ट प्रेजेंट हों। तो फार्मूला कहता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुणे छोटा डब्लू गुणे 1000 बटा में छोटा एम गुणे बड़ा डब्लू, जिसको अंग्रेजी में स्मॉल है और इसको कैपिटल डब्लू पढ़ेंगे। अब कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ स्मॉल डब्लू, तो इसको यही रहने दीजिए, इसको इधर मूव कीजिएगा और इसको नीचे लाइएगा। तो स्मॉल डब्लू विल बी डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन के एफ इंटू 1000। अब देखिए इसको लिख दिया। अब वैल्यू भरेंगे, डेल्टा टी एफ का वैल्यू 1.5 है, एम का वैल्यू जो है 176 है, कैपिटल डब्लू इज 75 है, के एफ इज इक्वल टू 3.9, ये पॉइंट है, इंटू 1000। We remove decimal point upper and lower. Same digits are present in right of decimal point. Therefore, we write direct 15, 176, 75, 39 and 1000। अब इसको कटाएंगे 5 से 3, 5 और 3 13 हो जाएंगे। ये 25 से कटाइएगा 3 बार में, ये 4 बार में हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। ये 2 राउंड से कटेंगे, 2 2, ये 5 हो जाएंगे, 5 5 कट आउट हो जाएंगे। वी राइट हेयर स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू 22 and 3 multiply, we get 66 and lower we write 13. Therefore small w will be 66 divided by 13 is equal to 5.0769 is equal to 5.077 gram. It is answer of the question first. Now we repeat, in the question ascorbic acid is solute and acetic acid is solvent. In the question the mass of ascorbic acid calculate, therefore we write a small w is equal to what? In the question mass of acetic acid is 75, therefore we write capital W is equal to 75 gram. Lower its melting point by 1.5 degree Celsius. It is a value of delta TF
Here we write delta TF is equal to 1.5 degree Celsius. Now convert degree in Kelvin. In the question, the value of Kf is equal to 3.9. Therefore, we write 3.9 Kelvin kg mole inverse. In the question, ascorbic acid is a solvent. Therefore, here we write MC6H8O6 and calculate molar mass of the ascorbic acid, which is 176 gram mole inverse. And now we write formula delta TF is equal to Kf into small w into 1000 upon small m into capital W. It is a solution of question first. Next question is 1.00 gram of a non-volatile solute dissolved in 50 gram of benzene. 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. Find the molar mass of solute. It is question asked 1.00 gram of a non-volatile solute. It is a mass of solute dissolved in 50 gram of benzene. It is a mass of benzene, which is a solvent mass. Lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. It is the value of delta TF in Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg mole. It is a given. Find the molar mass of solute. In the question, here we write a small w. A small w is 1.00 gram. In the question, capital W is equal to
50 gram. Delta TF is equal to 0.40 Kelvin. KF is equal to 5.12 Kelvin kg mole inverse. M is equal to what? Which is indicate molar mass of the solute. Now we write a formula in which all are present. We know that formula M is equal to Kf into small w into 1000 upon delta Tf into capital W. In the question, Kf is equal to 5.12, small w is equal to 1.00 into 1000 upon delta Tf is equal to 0.40 and capital W is equal to 50. Now remove decimal point upper and lower. In upper 2 and 2, 4 digits are present right. In lower 2 digit present in right. Both are equal to 0 extra. Therefore we remove 2 0 lower. 512 into 100 1000 upon 40 into 50 into it is the answer. Question 3 is 45 gram of ethylene glycol molecular formula is C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate. Question 1 is freezing point diffraction. Freezing point diffraction. Question B is freezing point of the solution. It is a question. Question is 45 gram of ethylene glycol. Molecular formula of ethylene glycol is C2H6O2 mixed with 600 gram of water. Calculate freezing point diffraction and freezing point of the solution. In the question, ethylene glycol is solute and water is solvent. Mass of ethylene glycol in question 45 gram. Here we write a small w is equal to 45 gram. In the question, water is solvent.
The mass of solvent is 600 gram. Therefore, here we write capital W is equal to 600 gram. Freezing point of water is 0 degree Celsius. Now we convert 0 degree Celsius in Kelvin. Here we write 0 plus 273 is equal to 273 Kelvin. Question first ask delta TF is equal to what? Question we asked TFS is equal to what? First of all, we calculate molar mass of ethylene glycol in the term of solute. Here we write a small m. This indicates molar mass of the solute in the term of ethylene glycol. Here we write molecular formula C2H6O2. Here we write C2H6O2. We add and we get 50 gram mole inverse. Here we write 24. 1/66. Now we write molecular mass of ethylene glycol. Molecular formula of ethylene glycol is C2H6O2. Atomic weight of carbon is 12. We multiply 12 and 2, we get 24. Atomic weight of hydrogen is 1. We multiply 1 and 6, we get 6. Atomic weight of oxygen is 16. We multiply 16 and 2, we get 32. Add the sum. Add the digit. Now we write formula delta TF is equal to what? Now we write formula delta TF is equal to Kf into a small w into 1000 upon a small m into capital W. In the question, the value of Kf is not right, but here we write K for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse. We know it is a fixed. Here we write 1.86 into a small w is equal to 45. 1000 a small will be we remove decimal point. 186 into 45 upon 62 into 600 into 10. Two zero cut out. We cut out 15.
we multiply 93 and 3, we get 279. We multiply 62 and 2, we get 124, and divide 279 divided by 124 is equal to 25 Kelvin. Now we explain question B. Question B asks delta TFS is equal to what? So we write formula delta TFS is equal to what? We write formula delta TF is equal to TF naught plus TFS. Here we write minus, therefore we write therefore delta TF is equal to TF naught minus TFS. So this part move here, TFS is equal to TF naught minus delta TF. Here we write TFS is equal to, the value of TF naught is equal to 273 Kelvin minus the value of delta TF will be 2.25 Kelvin. Therefore, we write here answer 273 Kelvin minus 273 minus 2.25 is equal to 270.75 Kelvin. It is the answer of the solution.